Assalamu alaikum viewers and welcome to my channel Qiraat of Quran. Viewers, आज जिस सूरत की मैं तिलावत करने जा रही हूँ वो सूरत हदीद है। सूरत हदीद कुरान पाक की 57 सूरत है। इसकी 29 आयात हैं, 4 रुकवात हैं और ये मदनी सूरत है। व्यूअर्स, सूरत हदीद कुरान पाक की 27 पारे की आखिरी सूरत है। इससे पहले व्यूअर्स मैं आपसे कहना चाहूँगी कि मेरी वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक कर लें, इसको दूसरों के साथ शेयर कर लें और सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल के आइकन को क्लिक कर लें ताकि आने वाले वक्तों में आपको मेरी आवाज़ क़िरात का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। व्यूअर्स, सूरत हदीद की फजीलत है, अगर तरक्की रोज़गार के लिए इस सूरत को 70 बार पढ़े, तमाम कारोबार दुनियावी बखूबी सर अंजाम पाए और हर काम में रौनक और बरकत हो। अगर बीमार पर यह सूरत पढ़ी जाए तो फजल खुदा सेहत पाएगा। आइए अब इस सूरत की तिलावत फरमाते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्दि वहुवल अज़ीज़ुल हकीम। लहु मुल्कु समावाति वल अर्दि युहयी व युमीतु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। हुवल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। हुवल्लज़ी खलक़ समावाति वल अर्द फ़ी सित्तति अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अलल अर्श। यअलमु मा यअलिजु फिल अर्दि व मा यख़रुजु मिन्हा व मा यंज़िलु मिनस समाई व मा यअरुजु फ़ीहा व हुवा मअकुम ऐनमा कुन्तुम वल्लाहु बिमा तअमलून बसीर। लहु मुल्कु समावाति वल अर्द व इलल्लाहि तुरजउल उमूर। यूलिजुल लैला फिन्नहारि व यूलिजुन नहारा फिल लैल व हुवा अलीमुम बिज़ाति सदूर। आमिनु बिल्लाहि व रसूलिही व अनफ़िक़ू मिम्मा जअल लकुम मुस्तख़्लफ़ीना फ़ीह फ़ल्लज़ीना आमनू मिनकुम व अनफ़क़ू लहुम अज्रुन कबीर। वमा लकुम ला तुअमिनूना बिल्लाहि व रसूलु यदऊकुम लितुअमिनू बिरब्बिकुम वक़द अख़ज़ मीसाक़कुम इन कुन्तुम मुअमिनीन। हुवल्लज़ी युनज़्ज़िलु अला अब्दिही आयातिन बय्यिनातिन लियुख़रिजकुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर व इन्नल्लाहा बिकुम लरऊफ़ुर रहीम। वमा लकुम अल्ला तुनफ़िक़ू फ़ी सबीलिल्लाहि वलिल्लाहि मीरासुस समावाति वल अर्द। ला यस्तवी मिनकुम मन अनफ़क़ मिन क़ब्लिल फ़त्हि व क़ातल। उलाइका अअज़मु दरजातन मिनल्लज़ीना अनफ़क़ू मिन बअदु व क़ातलू वकुल्लुन वअदल्लाहुल हुस्ना वल्लाहु बिमा तअमलून ख़बीर। मन ज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसनन व युضाዒफ़हु लहु व लहु अज्रुन करीम। यौम तरल मुमिनीन वल मुमिनाति यस्आ नूरुहुम बैना अयदीहिम व बिईमानिहिम बुश्राकुमुल यौम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहारु ख़ालिदीन फ़ीहा ज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम। यौम यक़ूलुल मुनाफ़िक़ून वल मुनाफ़िक़ातु लिल्लज़ीना आमनू उन्ज़ुरूना नक़्तबिस मिन नूरिकुम क़ील इरजिअू वराअकुम फ़ल्तमिस्सू नूरा फ़ज़ुरिब बैनहुम बिसूरिन लहु बातिनुहु फ़ीहि रहमतु व ज़ाहिरुहु मिन क़िबलिहिल अज़ाब। युनादूनहुम अलम नकुन मअकुम क़ालू बला वलकिन्नकुम फ़तनतुम अनफ़ुसकुम व तरबस्तुम वरतब्तुम व गरतकुमुल अमानियु हत्ता जाअ अम्रुल्लाहि व गर्रकुम बिल्लाहिल ग़ुरूर। फ़ल्यौमा ला युअख़ज़ु मिनकुम फ़िद्यतुन वला मिनल्लज़ीना कफ़रू मअवाकुमुन नार हिय मौलाकुम
وبئس المصير ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما ن- ن- نز- نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد وقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بين لكم الآيات لعلكم تعقلون إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم والذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة ونفخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نبعته ثم يعيج فتراه مصفرا ثم يكون حطما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد لقد أرسلنا رسولنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسوله بالغيب إن الله قوي عزيز ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم معتد وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على آثارهم برسولنا وكفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيده الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق الله العظيم.